Good evening, everyone. How are you all? All are preparing well for the mains examination. I think my sound is coming, right? Okay. Yes, sir. Audible. Okay. So yesterday, a few of you have attended the class of Rahul Srivastav. आप लोग क्लास किए थे कल का जो लेक्चर था वेबिनार था मे बी सम ऑफ यू and but I've shared the video also. You can watch and you can know the strategy of Rahul. But most of his all of the strategies and most of the strategies are aligned to whatever I told in the webinar. I'll discuss it. Just a moment, please. Hello. और ये कहते हैं कि उसमें 2 पॉइंट में चेंज होगा, है ना? आपको अब व्हाट्सएप कर दिया है, वो जेई बताया और कोई बात नहीं, आप ना उसको कर लीजिए, हम फिर एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं जेई से, तो कल फिर हम फाइनल करते हैं, तो अब परसों करते हैं साइन आके, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक। ओके, सो सो जो जो मैं आज बताने वाला हूँ आप लोग को, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल टुडे for those who are writing the mains, believe me and trust me, this will increase your marks to a great extent. मतलब this will help you to write a very qualitative answer to most of the questions, plus it will help you to complete the paper on time. कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जिन लोग का छूटने का प्रॉब्लम है वो आज मेरा वेबिनार सुन लेंगे, दूर हो जाएगा। और जिनको नंबर लेना है, अधिक से अधिक नंबर, तो ये स्ट्रेटजी से आपको एकदम सबसे ज्यादा मार्क्स इसी से जंप होता है। ठीक है, राहुल ने ये जो स्ट्रेटजी है पूरी लगाई थी और कल उसने ये बात बोली भी थी कि आपको क्वेश्चन प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं बताया उसने बिकॉज बिकॉज उसमें थोड़ा टाइम नहीं था, बट आई विल बी टेलिंग यू द होल डिटेल थिंग। ठीक है, कैसे हम मार्क्स इंक्रीज करेंगे इन एवरी पेपर इंक्लूडिंग ऑप्शनल। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। Okay, today. So today is basically what I'm discussing. It will be applied to all GS papers, even in the optional paper also. ठीक है, I will discuss the strategy of little bit of option also, that how to attempt the paper, how to prioritize the questions, and how to ensure that no question is left unattempted. Okay, so that will be the point of discussion today. So first of all, let's see, let's start on this part कि how to complete the paper, this and how to write qualitative answer. ठीक है, ये दोनों का एक ही जवाब रहेगा जो आई विल बी स्टार्टिंग, एंड इन द सब्सिक्वेंट टाइम आप समझ जाएंगे कि हाउ दिस कॉन्सेप्ट और दिस टिप विल बी वर्किंग एक्चुअली इन द एग्जामिनेशन। तो मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फैक्ट दैट कि आपका पहला पेपर जीएस है, जीएस 1 होता है, राइट? देन यू नो दैट देयर आर वेरियस सेक्शंस हैं जो कि क्वेश्चन 1 टू 20 है, कुछ उसमें ज्योग्राफी है, कुछ हिस्ट्री है, हिस्ट्री मींस मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, राइट? दीस टू आर देयर, ज्योग्राफी इज देयर, इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी एंड पार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोशल इश्यूज क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, ये पेपर है जीएस का। आई एम टेलिंग यू द एग्जांपल, तो बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल यू कैन अप्लाई इट इन जीएस 2 आल्सो, 3, 4 और ऑप्शन आल्सो। सो उसके पहले मुझे जस्ट उसको बताइए, जो भी यहाँ प्रेजेंट है अभी, कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड मेंस। जो लोग मेंस किए हैं वही बताएंगे पहला, तो जिनका पहला मेंस है दे विल नॉट एबल टू नो, है ना? यू हैव टू जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, सो जो आपने मेंस किया है, हाउ मेनी ऑफ यू रोड द आंसर इन सीरियल ऑर्डर अप टिल नाउ, यानी क्वेश्चन 1 से 20 तक। ऐसे कौन कौन लोग हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, हाउ मेनी आर देयर? मोनिका, अनिल एंड ओनली 2? 5 लोग हैं बस, बाकी सबने कैसे लिखा? नॉर्मल लिखा? ओके, भगवान, किरण, केके, दिव्यांशु पाल, ओनली दिस मच। बाकी सबने अच्छे से लिखा है। और कितने लोग हैं जिनका पेपर छूट जाता है? नाउ आई विल लोअर ऑल एंड नाउ यू रेज योर हैंड्स। जिनका पेपर छूट जाता है,
गजानन, मनु सिंह, मोनिका वर्मा, अनिल जंगेड, साई प्रवीण, है ना, एंड देन आयुषी एंड भगवान भरत। तो इतने लोगों का पेपर छूट जाता है ना, और भी संख्या बढ़ गई है। लेट्स सी हाउ मेनी। विवेक नरोल, अरमान यादव, किरण, आलोक एम्स, Sudhanshu and Pawan Kumar. So you people actually not able to complete the paper and you leave questions, ठीक है। एंड 50 मार्क पहले लिखा, आंसर छोड़ जाते हैं मतलब। ओके के ओके, व्हाट इज योर गुड नेम के के मींस हाउ मेनी ऑफ यू लीव द क्वेश्चंस, है ना, राइट, हाउ मेनी ऑफ यू लीव द क्वेश्चंस, like, okay, just one more thing, please raise your hands in case you don't know Hindi. In case you don't know Hindi, please raise your hands. Ayushi, okay, only one, so many are there, then I have to speak in English only. कितने लोग हैं भाई? किरण कुमार, okay, anyways, ठीक है, fine, I'll speak in English also, little bit Hindi only. Okay, so uh, my question is that you have already answered that how many of you are attempting the question in serial order. Serial means it also includes question 1 to 10, or then followed by 11 to 20, or 11 to 21st, then 1 to 10. This is also serial order only. Okay, this is one thing. Another thing, what a question that how many of you have left the question because of the paucity of time, that many of you have told. So today we'll be going to complete this thing, that there will not be any, you will not, from now onwards there will not be, you will not leave any question untouched, unattempted. Okay, we'll discuss the whole thing today. So give me the, let me tell you some of the important data also for this. Okay, see, first of all, considering the paper of GS1, see, maybe this is the paper, you'll get the paper, just आपको 5 minutes पहले पेपर मिल जाएगा, ठीक है। Now try to understand the paper, the process is like this, that suppose you have option of geography, so you know geography very well. Some might have the optional history, they know history very well. Somebody may have the optional sociology, so they know sociology well, ठीक है, ये फॉर हुआ GS1 के लिए। So any, yeah, in case you don't have any of these options, but still you have, good inclination over geography, you have good control over geography. Some of you might have good control over modern India, some of you might have good control over society, ठीक है, ये आपका बेस्ट टॉपिक्स होगा। इट इज नॉट पॉसिबल दैट you have all the topics as a, too good. So you have, best idea of maybe geography or history or society, if we consider the case of GS1, और कुछ miscellaneous भी questions हो सकते हैं, right? So considering this approach, those, which section you have the best idea, you have to attempt those questions first. आपको पहले वो करने हैं जो आपको सबसे अच्छे आते हैं, ठीक है। नी नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन सीरियल ऑर्डर, दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड कि सीरियल ऑर्डर में नहीं करना है। क्यों? बिकॉज यू डोंट नो दैट क्वेश्चन 1, 2, 3, that you might know question number 18, 19 very well. You might not know question 2 and 3, 4 very well, but you are going to attempt it. If you are attempting the serial order, you are going to spend your some time, if your allotted time, maybe 7-8 minutes for the 10 marker, or maybe for the 15 marker you have allotted 12 to 13 minutes. So you are going to attempt those questions, है ना, based, you're going to attempt those questions in the beginning. That means even if you're not knowing, you're going to attempt it, and you're going to waste some 7-8 minutes writing almost bogus answer, because you do not know. But while you reach in the end, 19 question, 20 question, 18 question, you have lesser time, and moreover it is a 15 marker, right? So you have almost, like, for example, you have almost 15 minutes, and you have to attempt 3 questions of 15 marker. Even if you are doing in the opposite way, you are attempting 15 marker first, and then moving to the 10 marker, then also you are you have to attempt some 3-4 questions in last 10-15 minutes. So obviously, you know that if you are attempting the serial order, you the best questions might lie in the end,
for you. If you're good at geography, maybe geography is the end. If you're good at history, maybe history in the end. Maybe society in the end. You are attempting the question in serial order and you're not worried about the last question. So you might miss those good questions which you have good command and for which you can write best answers. ठीक है? But in the end, you have just 5 minutes to write the best version of that answer because you are the best. You have that command worded subject, but because of the positive time, you have just 5 minutes or 7 minutes to attempt a 15 marker geography question. You might not attempt it in very good way. You just on an average you will write something and you will move on to the next question. Obviously you will lose marks there. You will lose marks. Why? Because those questions are not attempted well by you in spite of knowing that you know it very well because of paucity of time, and you are maybe you have just 5 minutes to attempt it or maybe 7 minutes. But in case you are attempting serial order question 2 3 4 and you're not doing it well, but you have allotted some time 7 minutes and therefore you are going to attempt it and writing all bogus things, and still you are getting 1 or 2 marks, hardly 1 or half mark if you do not know much. But in the end, in the end questions you are attempting it in the end, and in spite of knowing so much you don't have time to write it, resulting in loss of your content, loss of marks also. Got my point? This point you got? Coming to now that how you have to do them. Attempt the questions in the order of your knowledge. It means the best questions which you know should be in the beginning, followed by the lesser known questions. ठीक है? तो क्या होगा? Let's see what will happen then. For example, है ना, I will first tell you something. In case of any doubt, don't worry. You note it down. Interrupt me in the end when I complete my thing. When you're going to write an answer, question, maybe suppose you got the paper of GS1 and you're good at geography, like for example my option is geography, so I know any question of GS I can write in, GS question on geography I know very well. So as soon as I get the paper I'll find out, जैसे मैं क्या करता था, what I did, just I see the paper and I find out where the geography questions are there, and then I see, okay, it is question number 17 18 19 is geography 15 marker, and then some three questions on the 10 marker also, they are question number 7 8 and 9. ओके सपोज, ठीक है, ऐसे देखा मैंने, देन इमीडिएटली नो नीड टू रीड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. व्हाई? बिकॉज उसका रीजन है, आप पूरा पढ़ोगे इट विल टेक 4-5 minutes, यू विल वेस्ट टाइम, अगेन यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. अभी तो आपको लिखना नहीं है, यू आर गोइंग टू राइट, देन ओनली यू आर गोइंग टू रिकॉल. यू विल जस्ट रीड, यू विल वेस्ट टाइम. फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस यू माइट नॉट नो, क्वेश्चन 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, मे बी क्वेश्चन 12 नहीं आता, 13 नहीं आता, then you'll short, अरे यार मेरा तो होने ही नहीं है, मतलब I am lost, I don't know, 4-5 questions is what I will write, you will be in tension. In that tension you will forget the good questions which you know well. You will not your negativity will overpower your positive attitude which you entered in the classroom, in the beginning. Now because of the negative attitude your marks, your performance will go on declining as the time will pass in the examination. Okay, so no need why to see the unknown questions. When the time will come I'll see that, no problem. So first of all, what is my best I'll do in the very first hour. So as soon as I get the paper, without wasting any time, but as soon as the bell will ring, so before that you have seen that okay, geography hai question 17 18 19 and question 7 8 9 in 10 marker is geography. Now I'm going to attend. As soon as the bell will ring I will open my sheet and I will start from 15 marker first. So question number 17 I'll attempt फटाफट फटाफट, है ना, then question number 18 19. So by the time the 1 hour will pass, I have given my best into those questions which I know very well. I have drawn diagrams, I put the heading, I wrote in points, I have analyzed the question well, I have written what is asked, and I have the crucial knowledge of it. So I I wrote the answer in a much deeper way also. So like this you will write the answer in the first hour. Now suppose, मतलब ठीक है, इतना क्लियर है, दिस मच क्लियर. नाउ in this way try to understand that the equal time you have allotted in your thinking, because आपको कोचिंग वाले क्या बोलेंगे कि it's 150 marker है, so 150 marker you have hardly 8 minutes almost ना, then 250 marker you give it 30 minutes, so you allot time and then you write down the answer as per the time limit. Always worry about the word limit also. Okay, they will tell you
They will tell you that always worry about try to see that you have completed 250 words. Try to see that don't exceed 150 words. Now, in today's class, I want to say that all these are rubbish, almost rubbish. No need to think on the lines of the word limit. No need to think on the lines of the time limit per question. That means word limit per question and time limit per question is the useless things which you have been told by the coaching centers till now. ठीक है. See, I managed UPSC 4 interviews in all patterns. I've given the UPSC in all patterns since 2011 है ना 9 से. आई गिवन ऑलमोस्ट ऑल पैटर्न्स जब सीसेट था नहीं था 2 ऑप्शनल थे एक ऑप्शनल था प्रीलिम में भी ऑप्शनल था एंड ऑल द पैटर्न आई गॉट द इंटरव्यू कॉल ओके सो आई टेल यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस दैट जो कोचिंग वाले बोलते हैं दैट इज ऑफ देयर ओन थिंकिंग वो इट मे नॉट बी राइट बट व्हाट आई एम टेलिंग यू मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड हियर विथ मी एंड दो एक्चुअली जो कम मेहनत पे ज्यादा नंबर लेते हैं वो उसका उसका फंडा यही है कि never think about the word limit and the time limit per question. ये bogus है. This is to distract you and this will not help you in gaining more than your own potential. It may help you to gain some marks. But मेरा जो आप लोग को मैं बता रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ I am telling you that how to raise your potential, how to gain marks more than your own potential. यही यही बोल के मैंने आपको वेबिनार के बारे में बताया था जब भी आपने कॉल किया होता. तो आज मैं वही बता रहा हूँ है ना. पहले वाले 2 सेक्शन में भी एथिक्स में यही बताया था. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ टू गेन मोर मार्क्स देन योर ओन पोटेंशियल. उसका तरीका है डोंट फॉलो द वर्ड लिमिट पर क्वेश्चन एंड वर्ड लिमिट एंड द टाइम लिमिट पर क्वेश्चन. तो क्या फॉलो करना है? यू हैव टू फॉलो. See, word limit and time limit is automatically controlled by the number of pages you have and the time in total you have. ठीक है. तो टोटल टाइम है 3 hours एंड नंबर ऑफ पेजेस पर क्वेश्चन है. these two things will automatically control your number of words and the time per question plus the knowledge you have. वो तीनों का जो होगा ना कॉमन जो होगा सबसेट उससे कंट्रोल हो जाएगा. डोंट थिंक अबाउट मच ऑन दिस लाइन. थिंक अबाउट द क्वेश्चन. कैसे? तो as soon as you got the paper, you identified the questions, maybe of geography or whatever the subject is good to you, and start writing from the very first minute. As soon as the bell ring, आपने खोला start. So by the time you will complete one question and you look around, you'll find that कुछ लोग क्वेश्चन पेपर ही पढ़ रहे हैं. कुछ लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ के अब सोच रहे हैं कि लाओ भाई अब लिखा जाए. ठीक है. कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या क्या पेपर आ गया, कैसा क्या आंसर लिखें, कहाँ से शुरू करें. So by the time they are thinking, you are ahead of them by one question, maybe that 15 marker question, and so you will be ahead of them in the end totally. आप लास्ट तक उनसे बहुत आगे निकल जाओगे. You complete the whole paper. आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा. कैसे इसको हम डिस्कस करें? Come on, see. The first hour you have to attempt. Now I'm telling that how many questions you must attempt in the very first hour. See, in the first hour you know the questions very well. You have complete idea, control over those questions. So you are starting to read those questions and you are going to attempt it. है ना. सारे पेज भरने हैं. तीन तीन पन्ने मिलेंगे. You got your 3 pages in 15 marker, 2 pages in 10 marker. You are going to attempt the whole question, right? 3 pages you have writing whole thing whatever you know. जो आता है as per the question is asked. Don't write the bogus answer. As per the question asked, understand it, the requirement of the question, and then you are going to address it completely. ठीक है. So then you are going to write the whole question. The first question may take 14 to 15 minutes. बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? इनर्शिया होता है. सोचते सोचते थोड़ा धीरे ब्रेन को धीरे धीरे स्टार्टअप होता है, स्टार्ट हो रहा होता है नहीं जैसे इंजन गर्म होता है. तो उसके बाद से आप धीरे धीरे आपका फास्टर होता चला जाएगा लास्ट तक. तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनर्शिया और दूसरे रिटर्न मींस यू नो दैट कि स्टार्टिंग में इनर्शिया होता है थोड़ा सा. पहला क्वेश्चन ज्यादा टाइम लग जाता है. तो मे बी 14-15 मिनट्स भी लग सकता है. डोंट वरी अबाउट इट. सेकंड क्वेश्चन विल बी मच फास्टर. उसको 12 मिनट्स में खत्म कर देना है. थर्ड में maybe 10 minutes, 11 minutes. ऐसे करते करते on an average in a 1 hour you will complete 5 questions. But these 5 questions are the best question of yours in the whole paper, right? और इतना बेस्ट है because you are going to maximize your marks in this. अगर 15 मार्कर का है you're going to score 10 or above. अगर वो 10 मार्कर है you're going to score 6 and above, right?
because you have written the best answer across so many candidates, because you know them very well. You have attempted them in the beginning, and you have given your whole heart and whole thing you have done there. Sorry. Okay, got my point. So first hour mein there will be 5 questions which you can attempt, including the maybe 10 marker also, but these will be your best questions. Then first hour is over, and suppose you have attempted 15 marker and some 10 marker, and on average you calculate 10 marks for the 15 marker, so 3 questions, so you got 30 marks. Sorry, 15 marker questions, maximum 10 marks you'll get, so 30 marks यहाँ हो गए. और जो दो आपने 10 मार्कर किए, में भी आउट ऑफ 10 यू विल गेट 6 मे बी, तो 12 एंड 30 ऑलमोस्ट 42 45 तक आप ले सकते हैं, राइट. मे बी यू हैव अटेम्प्टेड 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इन 30 मार्क 15 मार्कर आल्सो, सो यू विल गेट ऑलमोस्ट 45 के अराउंड आपको आ जाएगा फर्स्ट आवर में. एंड सी नाउ द टारगेट ऑफ भाई लोगों का टारगेट क्या होता है कि सर 100 क्रॉस करना है, तो भैया आपका फर्स्ट आवर में 100 क्रॉस, 100 का 50% क्रॉस नहीं हो गया, ऑलमोस्ट 50% आ गया. 100 मार्क्स आपको लेने हैं, 45 के अराउंड आप आ ही गए फर्स्ट आवर में. यू हैव अगेन 2 आवर्स. वोंट यू रीच, वोंट यू क्रॉस 100 मार्क्स इन नेक्स्ट 2 आवर्स व्हेन यू क्रॉस्ड इन 1 आवर, यू क्रॉस्ड 45 मार्क्स. गॉट इट ना. तो ये स्ट्रेटजी है कि दिस वे योर मार्क्स विल रेज, this way your marks will raise in the first hour itself. ठीक है. Then coming to the second hour, the second hour में you have to see your second best part, maybe history. सो अमन, द फर्स्ट आवर 5 क्वेश्चंस, मतलब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि बेस्ट रन होंगे तो आप 5 ही कर पाओगे, 5 से थोड़ा कम हो पाएगा, 4.5 भी हो सकता है, पर 5 से ज्यादा हो नहीं पाता फर्स्ट आवर, बिकॉज दीज आर द बेस्ट रन क्वेश्चंस, एंड यूर सम ऑफ मोस्ट ऑफ देम विल बी 15 मार्कर, एंड यू आर राइटिंग देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे. ठीक है. सेकेंड आवर में यू आर कमिंग, अरे तेजस, जस्ट वील डिस्कस फर्स्ट, ओके, वो उससे इंटरप्शन हो जाता है. इन द सेकेंड आवर, you have to answer those questions which are second best for you. Maybe मेरा geography था, तो next best is maybe modern India और history का कुछ part है. So I'll go for the, or maybe I love the society, तो मैं उसको कर सकता हूँ. So I'll go to the, जो भी मेरा बेस्ट पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री लेते हैं, मॉडर्न इंडिया प्लस प्लस आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है. सो विल टेक दैट. उसमें मैंने क्वेश्चन करने हैं 7 क्वेश्चंस, बिकॉज दीज आर लेसन नोन क्वेश्चंस. यू विल राइट इन अ गुड आंसर, मतलब अबव एवरेज, बट उतना बेस्ट नहीं होगा जितना फर्स्ट आवर का है, बट दे आर लेसन नोन क्वेश्चंस, बट यू नो देम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. तो आपने उसको भी बेस्ट किया. 7 क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट इन द सेकंड आवर, तो टोटल 12 हो गए, राइट. तो थर्ड आवर आएगा. नाउ हियर यू नो द लेसर नोन क्वेश्चन, यू हैव लेसर नोन. अब इसमें क्या आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री भी हुआ, आर्ट एंड कल्चर को 1-2 क्वेश्चन हुआ, नहीं आ रहा है, फिर कुछ सोसाइटी हुआ, मे बी कुछ और हुआ, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस 1 फॉर एग्जांपल. सो देन इन दिस यू हैव टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस, क्योंकि 8 कैसे हो सकते हैं. Now your time will decrease per question, because you are not going to write the bogus answer. Now you don't have to write the bogus answer, you have to just write the what you know, you write, and what you don't know, you have to just write something which keyword as per what knowledge you're writing. In the end you will find 2-3 questions की बिल्कुल नहीं आता और टाइम भी नहीं है. सपोज इन द एंड यू हैव almost 10 minutes left and you have 3 questions or maybe 2 questions to do. Now these 2 questions are hardly known to you, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 12 है या 13 है, हार्डली आपको आता है, आपको 10 मिनट है या 5 मिनट ही है, तो क्या करेंगे, वॉट एवर यू नो, मे बी कीवर्ड्स, एक्सपेंशन, इंट्रोडक्शन कुछ लिखना है, कुछ आपको डेफिनेशन पता है उसमें, तो जस्ट राइट दैट, और जो भी आपको लिखना है, क्योंकि बोगस लिखने का नंबर नहीं है ना, वॉट एवर यू आर राइटिंग बेस्ड ऑन द कंटेंट, भाई यू विल गेट द मार्क्स. नाउ यू हैव लेसर नोन कंटेंट, बहुत कम आता है, और कुछ लास्ट के क्वेश्चंस में इन द एंड यू नो वेरी लेस और ऑलमोस्ट निल, 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसे ना बिल्कुल नहीं आते. सो ईदर इफ टाइम इज देयर यू राइट समथिंग वॉट एवर यू नो एज पर द कीवर्ड्स. इफ यू डू नॉट नो यू मे लीव देम ऑल्सो, बिकॉज वो ऐसे भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला है. if they are asking you something x, you are writing y, you won't get marks. और झूठ मूठ का टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स नहीं मिलना है. सो मार्क्स नहीं मिला तो वो टाइम हम यूटिलाइज कर चुके हैं ऑलरेडी इन द फर्स्ट आवर में गुड क्वेश्चंस में. जो मैं यहाँ पे 7 मिनट अलॉट किया था उसको वेस्ट करता राइटिंग बोगस आंसर, देन अनदर 18 क्वेश्चन 90, मतलब लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में
6-7 मिनट जो अलॉट किया था और 15 मिनट अलॉट किया था लास्ट में, I could have wasted there and got no marks. Instead, I utilized those time and invested in the best question of mine in the beginning, first hour or maybe second hour, and I got the best marks out of it. And now here I'm not getting any marks, so why to waste time in writing? अगर वो छूट रहा है तो छूट जाएगा, वैसे भी नहीं आता, ऐसे भी नहीं आता है, right? Got my point now. So पहले फर्स्ट आवर में 5 क्वेश्चन हुए बेस्ट, सेकंड आवर में सेकंड बेस्ट क्वेश्चन 7 हुए, और 8 और थर्ड आवर में 8 क्वेश्चन हुए, टोटल 20 हुए. इन केस अगर थर्ड आवर में भी एक दो क्वेश्चन नहीं आता तो मे बी यू डोंट हैव टाइम टू राइट, तो लीव हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ कोई आता हुआ क्वेश्चन नहीं छूटा है आपका. आई टोल्ड ना कि क्वेश्चन छूटना मतलब वो होता है कि मुझे आता था पर मेरा छूट गया. I have a geography option. Myself I have the geography option, and in the end question number 18 19 around were about the earthquake and the plate tectonics. और ये मुझे आता है बहुत अच्छे से, पर मेरे को टाइम नहीं था, छूट गया. सो ये मेरा लॉस हुआ. अब मान लो 18 क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, हमको नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, वो तो छूट गया तो छूट गया, बट उसका टाइम मैंने कहीं और लगा दिया जहां मैंने नंबर खींच लिया. यही स्ट्रेटजी है. ठीक है, ये मैंने दो पार्ट में स्ट्रेटजी बता रहा हूँ. ये पहला स्ट्रेटजी है कि पेपर ऐसे पूरा करेंगे. अब नाउ you have attempted all known questions, and in that process maybe one or two question you do not know, you might have attempted in a lesser words, or almost you have left it. ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ क्लियर हो गया. नाउ दिस वे यू आर गोइंग टू स्कोर बेस्ट आउट ऑफ द मार्क्स एज पर योर नॉलेज. आपने पूरी नॉलेज उसमें शो कर दी पेपर में, एंड मैक्सिमाइज योर स्कोर. नाउ द सेकंड पार्ट इज दिस वर्ड लिमिट, जो हम अभी डिस्कस किया कि सर वर्ड लिमिट फॉलो करना. टाइम लिमिट जो मैंने बता दिया कि टाइम आप ऐसे डिवाइड करेंगे बेस्ट टू वर्स्ट, तो टाइम इंक्रीज होगा स्टार्टिंग में और धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा इन द एंड, बिकॉज लास्ट का क्वेश्चन में 2-3 मिनट्स 4 मिनट्स होगा, और वो ज्यादा मतलब यू डू नॉट नो मच अबाउट इट ऑल्सो. So like this time will rearrange as per your knowledge, and similarly the word limit will also rearrange. जैसे starting में 250 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे आप, 50 मार्कर, you will give, you will write a whole 3 pages, you might exceed the word. आप 300 लिख सकते हो, 350 350, if the page capacity is there, it is automatically controlled by the page capacity. 3 ही पेज है, कितना लिखेंगे आप, right? So इसकी लिमिट, nobody is going to count your words, understand that, nobody is going to count your words. Also if you are writing less, अगर आप कम लिखते हैं और आपको आता ज्यादा था पर आपने कम लिखा है, that means you do not know it well, other candidates have written it completely, then in that case you lose marks. तो वर्ड लिमिट्स को एक्सीड करेंगे तभी नंबर आप ले पाएंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एक्सीड कब कर पाएंगे? जब आपको नॉलेज होगा. जब नहीं होगा तो एक्सीड भी नहीं कर पाएंगे. आपको 150 वर्ड्स भी एक्सीड नहीं कर पाएंगे इफ यू डू नॉट नो मच अबाउट दैट टॉपिक. ओके ओके, क्रेडिट को आई टेल दिस, ओके, डोंट वरी. सो ठीक है. सो इन द एंड जो आप लाएंगे क्वेश्चन, जो आप करेंगे बेस्ट क्वेश्चन, while the decreasing order of your knowledge जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दैट केस द वर्ड लिमिट विल बी कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली. जो कम आता है कम लिखेंगे, जिसको ज्यादा आता है अच्छे से लिखेंगे. एंड द टाइम लिमिट इज ऑल्सो वेरी वेल sorted आउट. जिसको ज्यादा टाइम देना है, जिसमें ज्यादा आता है उसको ज्यादा स्टार्टिंग मिलेगा, उसके बाद वो डिक्रीज होता चला जाएगा. ये तो क्लियर कट है. ठीक है. And word limit, I'll tell you that we have always exceeded the word limit in most of the questions. And even I was never penalized in case of GS paper. Always got the best marks in GS. Even when there was when we used to write in that paper also. In अभी तो क्या है कि आप बुकलेट मिलती है, QCA मिलता है. पहले क्वेश्चन पे अलग होता था, आंसर बुकलेट अलग होता था, and there you write it. There also the limit of words were there. But me and some of my friends have always exceeded the word limit and wrote so much, and everybody got the entry call and very good marks in GS. ठीक है. So कहने का मतलब ये है कि this is the thing which is actually working in all patterns and will work. Why? Because whatever you know you have written in 3 pages, nobody is going to count the word. They see, okay, you have written good content, everything is clear, they will give you marks, more marks. And as the content decreases, as the knowledge decreases, the content will decrease, and the content will decrease, obviously the time it will take will also be less, and therefore the marks will also be less. Because आपको आता भी नहीं है, बोगस आंसर लिख रहे थे, कोई फायदा नहीं है. For any bogus answer, that means you are, you know, cutting the time from the known questions, well known question, into an unknown question and putting it there without the use of it, without getting an extra marks. ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखना. ये this strategy will help you to score, मतलब आपका 50% strategy ये वाली है.
एंड 50% जो धीरे चलेगा रेस्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। इसका फायदा क्या है कि बेस्ट क्वेश्चन में यू हैव मैक्सिमाइज योर मार्क्स एंड कोई क्वेश्चन छूटा भी नहीं जो नून क्वेश्चन है। तो ये इन ऑल वे इट हैज गैदर्ड योर मार्क्स। ओके, नाउ कमिंग टू वन मोर क्वेरी। अब इसमें इस वाले पार्ट को खत्म करने से पहले एक दो क्वेरी एड्रेस कर लेते हैं। लाइक किरण कुमार सेड, बट some say the first impression of evaluator after seeing the paper, question number one, matters a lot, especially in ethics and optional. Okay, now you just see this. Impression matters, ठीक है, क्वेश्चन वन इंप्रेशन मानते हैं। नाउ जस्ट सी द टू पार्ट्स, टू कॉन्सेप्ट। एज पर इफ यू गो फॉर द इंप्रेशन ऑफ द एग्जामिनर, आपको क्वेश्चन वन नहीं आता, मान लिया आपको नहीं आता, ठीक है, by chance the question one is from the tougher side and you do not know what you will write in Kiran Kumar, will you going to write something, some bogus thing? Will it give a good impression to the examiner? But if you do not know the question, what you will write? Or if you know partially, how much good ever you write, you do not know the full content. You do not know the exact answer. You will just write around the some topic. So will it good? Will it hold some impression for the evaluator? See, your impression on the evaluator will not be for the question one. It can be of any good question. One thing. And let's see first of all understand that how the UPSC is checking the paper. See, initially when you used to have the booklet of answer, there the one examiner will check the whole paper. ठीक है, now the concept is different. Now you have the question cum answer booklet in which every question has clear कि ये history का है, this question 1 to 5 is history, question 6 to 10 is geography, then question 11 to 15 maybe of society, like that it is divided. And therefore in a round table the examiners of society, history, geography will be there. They will checking their respective questions and they will passing that copy to the next person. This was the concept because of which it was introduced in the UPSC by Dr. DP Agarwal. Why? Because initially the specialized professors and the teachers were not checking the specialized questions. They are checking one teacher for all questions. Even if you do not know history, geography, he is checking the whole paper. Now they have specialized persons for the specific questions. So therefore, your question 1 to 5 may be checked by some other person. Question 6 to 10 will be checked by some other person. So what is the person who is checking your 6 to 10 or maybe 11 to 15? Is that person worried about your question number one? Nobody worried. They are checking their own questions. Okay. So in any case, this concept is just bogus that you will write the first question. This was the thing when you were in school or college. ये पहला क्वेश्चन होगा, बेस्ट होगा, इंप्रेशन है. So here it will not matter. Okay, here it will not matter. Okay, got my point. So this is the thing. So I think Kiran, you got my point that it will not matter if you do not know the first question. No need to just waste your time. Just attempt the questions in the order of your best priority. Coming to Tejas, what if I know some questions well from all subjects? What is the meaning of this? Okay, you know some questions. So usme bhi whatever you know the best, you will attempt that first. It is possible that you know some of the questions. So usme bhi whatever topic you have the favorite or whatever questions you know the best, you start attempting from there. Best known means out of whatever questions you know, which are the best one. Okay, I think I addressed both of your queries. Question 3 from geography. Yes, you can attempt based on. See, I told geography because geography is my option, so I know very well. But आपको geography, history सबसे कुछ कुछ लगता है best है. पर ऐसा नहीं होता है. Generally, one subject is very good. Like for example, PSR people will be very good for IR. So for the GS paper, other than GS1, they can directly go for the IR questions. Somebody in the is good at economics, so for GS they'll directly go for the economics questions. Okay, so like this it works. Some you people might be having special strategy for the सब्जेक्ट वाइज पेपर. ठीक है, सब्जेक्ट वाइज पेपर, सब्जेक्ट वाला जो पेपर है ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, GS2 किसी का अच्छा तो GS2 में वो पहले पहले पॉलिटी करेगा. सो इट डिपेंड्स. ओके, गॉट माय पॉइंट एवरीबॉडी? एनी अदर क्वेरी इन दिस पार्ट?
नहीं तो इसको खत्म करें फिर आगे बढ़े। Any tips for filling the pages for questions we don't much provide we have left time? ठीक है, see फिलिंग द क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ये भी चलो कर लेते हैं डिस्कस, क्योंकि मैं उसको बाद में बताता, पर नाउ लेट्स डिस्कस। सी फर्स्ट यू, भाई राउंड में बता दिया कि 8 मतलब 5 7 8 क्वेश्चन डन, 5 मिनट्स मान लो कि बचे हुए हैं। सो यू वांट टू फिल द पेजेस, डेफिनेटली यू कैन फिल द पेजेस, कोई बात नहीं। तो फिल कहाँ करना है, उनको करना है जो आपको आते हैं, वट एवर क्वेश्चन यू नो। इफ यू डू नॉट नो वट यू विल राइट, bogus answer. So don't waste time. Use your knowledge. Whatever the page is left in some of the questions, you attempt that. ठीक है. You increase the conclusion part more. Write some more thing examples. कुछ और याद आया तो वहां लिख दिया. Right. And one more thing कि इसको करने के लिए you have to follow one thing which is मतलब you have to follow that यूपीएससी ने आपको बोला है हर पेपर में, जीएस पेपर में, तो आफ्टर एंडिंग द क्वेश्चन स्ट्राइक ऑफ द रिमेनिंग पेजेस, ये लिखा रहता है, strike off the remaining pages so that you nobody will write in that answer। मतलब आपका पेपर अगर 3 पन्ने का पेपर 1.5 पन्ने में खत्म हो गया तो हाफ पेज यहाँ एंड 1 फुल पेज को काट देना है, राइट और रॉन्ग, लिखा होता है। सो Yes, मोस्ट sir. ऑफ यू, हाँ, सो मोस्ट ऑफ यू पीपल डू दिस और नॉट, जस्ट टेल मी कितने लोग करते हैं, रेज योर हैंड्स। सारा मिथ बस्ट होगा लग रहा है। नोबडी विल, चलो अच्छा है, वेरी गुड, नेवर डू नो, ओ वेरी गुड। So most of the candidates before when I they joined here also last year also, many people who wrote mains 2 3 mains and they're on an interview call, they generally strike of the remaining pages left that question। मतलब if you have 3 pages, 1.5 page you wrote and another 1.5 page you strike off because it is written in the UPSC instruction, and maybe you wrote out of 2 page 1 page, तो second page you strike off। So वो नहीं करना है, you need not have to do that even if it is written in the UPSC paper। Why? Because in the end you might find, okay, अरे मेरा I forgot some example, I can go and you can go and write there। Sometimes you will see, okay, I have 5 minutes left, let's add some more value to my already known question which I have written 1.5 page, let's complete 2 page, तो एक और paragraph let's complete it, let's draw some diagram in some remaining pages, you'll go there and draw the diagram। ठीक है, like that you can do there, ये आप कर सकते हैं if you have not striked off the pages, and this will be in the end, this will add your value to the answer। ठीक है, and it will utilize your remaining time। now coming question with the Pritpal, ऑप्शन में स्ट्राइक ऑफ करना पड़ेगा ना, वी हैव द ऑप्शन देयर 5 टू बी डन आउट ऑफ 8। अब कहाँ ऐसा होता है, you have the questions written A B C D on every page, whatever page is there it is written there, आपको cumulative पेज मिलता है। For example, question 1 and 5 are compulsory, right? Like Prithpal, you just unmute and just you can let me know what is your query। यस सर। सर जैसे कि पहला और पांचवा क्वेश्चन कंपलसरी है ना, हम्म तो अभी मैंने जैसे कि पहले मैंने 1 2 3 किया और हम्म फिर 5 6 किया, तो जो 4 और 7 8 क्वेश्चन तीन जो नहीं किए, तो उनमें हम्म। स्ट्राइक ऑफ करना है क्या? अच्छा, जो नहीं किया उसमें नहीं करना, नो नो, नहीं नहीं उसमें नहीं। सी वॉट एवर यू आर अटेम्प्टेड यू आर ऑलरेडी गोइंग टू मार्क इट इन द फर्स्ट पेज जो उसमें लिखा होता है क्वेश्चन नंबर, ओके यू आर राइटिंग देयर, ओके तो एग्जामिनर वही मार्क्स दे ओके देगा ना। उस जो ओके नहीं किया अटेम्प्ट उसको क्यों स्ट्राइक ऑफ करोगे। बाई ओके चांस ऐसा भी होता है कई बार, कुछ लड़के, चलो मैं बताऊंगा बाद में, तो कभी कभी ये गलती होती है कि कुछ क्वेश्चन गलत भी अटेम्प्ट हो जाते हैं, आई विल टेल, वो भी मैं आज ही बता देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं प्रिंसिपल, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं ऑप्शनल में एज पर द चॉइसेस, नो नीड टू स्ट्राइक ऑफ, स्ट्राइक वाला छोड़ ही दो, मत करो, बिकॉज यू ओके हैव द पॉसिबिलिटी टू अटेम्प्ट इट एंड रिवर्क ऑन इट इफ यू हैव टाइम इन द एंड। और आप बीच बीच में कुछ याद आता है, एग्जाम्पल छूट गया, वो डाल दिया वहां पर, अरे वहां पर डायग्राम छूट गया, वो डायग्राम डाल दिया, ये पॉसिबिलिटी जब रहेगी जब स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे, राइट। सो इट्स डन नाउ। Tejas has said is not, I don't strike off in option as well as go to 50 270। Okay, I one more thing, one mistake one of my students did
ऑलमोस्ट आउट ऑफ दिस जो भी आते हैं मेरे पास 50-60 लड़के हर साल, है ना, 70 जो भी लड़के होते हैं, उसमें से 2-3 लड़के ये मिस्टेक करते ही करते हैं एग्जाम में। कितना बार भी बताओ तब भी अननोइंगली नोइंगली दे डू दिस मिस्टेक। क्या मिस्टेक है आज भी बता देता हूँ, बिकॉज दिस इज द, मतलब मैंने बोला था ना कि क्या विल बी टेलिंग यू हियर इन दिस प्रोग्राम द मिस्टेक्स यू पीपल आर डूइंग अनकॉन्शियसली अननोइंगली। सो आज वो मिस्टेक जान लीजिए एंड डू नॉट डू इट इन द एग्जामिनेशन। दिस मिस्टेक जनरली कैन अपीयर इन एनी पेपर इंक्लूडिंग एथिक्स। क्या मिस्टेक है? स्पेशली एथिक्स में बहुत होता है। मेरे मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, 2-3 स्टूडेंट का उनका ये मिस्टेक एथिक्स में हुआ, 1-2 का जीएस 2 में भी हुआ। You have two papers, one is QCA and one is question paper. You read the question paper. अच्छा क्वेश्चन 4 करना है, तो इन द मीन टाइम यू क्वेश्चन पलटा, क्वेश्चन 4 आपने देखा, क्वेश्चन मैच किया, देन यू राइट द आंसर। बट इन दैट हरी मेनी पीपल विल नॉट मैच, सोचेंगे क्वेश्चन 3 तो किया ही है, क्वेश्चन 4 करना है, तो वो पन्ना पलटे गलती से बाय मिस्टेक 2 पेजेस क्लब्ड अप एंड दे टर्न डाउन। तो क्या होगा? यू आर इन क्वेश्चन नंबर 5 and unconsciously, unknowingly, without matching the question, you wrote question 4's answer in question 5 QCA booklet. Question 5 में लिख दिया, question 4 you are writing, you are handling, you are going to write it. But when in turning the pages in hurry and without seeing the actual question in QCA booklet, your copy, मतलब जो आपकी कॉपी है उसमें क्वेश्चन 4 की जगह हमने क्वेश्चन 5 लिख दिया। अब जब क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया, देन यू थॉट अरे ये तो क्वेश्चन 4 का आंसर है। नाउ वो टाइम पूरा वेस्ट हो गया, 10 मिनट गए। अब उसको काटना है और फिर से उसको 4 मिनट्स, उसको उसको 10 मिनट्स लगेंगे लिखने के लिए क्वेश्चन 4 में। तो क्या क्या रिजल्ट रहा कि लास्ट में आपका 2 क्वेश्चन छूट जाएगा या 1 क्वेश्चन छूट जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज़ ये पूरा वेस्ट हो गया, वेस्ट भी हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया एंड मार्क्स भी नहीं मिले। ठीक है? तो इसमें डबल लॉस हुआ। जो टाइम वेस्ट हुआ उसकी वजह से 1 क्वेश्चन और खराब हो जाएगा लास्ट में। तो 2 क्वेश्चन का आपको लॉस है। ठीक है? एक गलती की वजह से जस्ट टर्निंग द पेजेस, नॉट मैचिंग द क्वेश्चन दैट व्हाट क्वेश्चन यू आर राइटिंग, देन दिस विल हैपन। और ये कितनी बार भी बताता हूँ, हर बार 2 लड़के कर लेते हैं इसको हर बार। सो बी श्योर दैट यू शुड नॉट डू इट दिस ईयर। ठीक है? और जब हो जाता है तो मुझे इंटरवल में कॉल करके बताते हैं, या फिर क्लास के बाद पूरा होने के बाद कि सर ये हो गया, अब तो मैं घबरा गया, ये हो पैनिक हो जाता है आदमी। ठीक है? सो दिस थिंग, अनदर थिंग मैं इसमें कहने वाला था, वन मोर थिंग कि दिस वे यू शुड प्रिवेंट द मिस्टेक्स ऑफ रिपीटिंग द, मतलब राइटिंग द रॉन्ग आंसर, मतलब राइट आंसर ऑन रॉन्ग क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या क्या टेक्निक क्या है, हाउ टू कंफर्म दैट? सो सो द वे टू कंफर्म इज दिस, दैट यू मार्क द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर कि मुझे क्वेश्चन 4 करना है, बट रीड द क्वेश्चन, मतलब उसमें रीड तो कर लो, बट रीड अगेन फ्रॉम द QCA booklet. When you read from the QC booklet, then there you won't do any mistake. अब रीड कर लेंगे तो आप उसको सही कर लेंगे, राइट इन द राइट थिंग। जेम्स बॉन्ड, should we make marking on questions in the answer booklet? हाँ, you can do that, like marking the sub part, circling important keyword, I do this, does this, no you can do that। ये क्वेश्चन बहुत हर बार लोग पूछते हैं और हर बार मैं बोलता हूँ you can do that, उससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट डोंट मेक एनी स्पेशल मार्क एज ऑलरेडी रिटन इन द बुकलेट, स्टार और कोई पैटर्न फॉलो कर लिया, कोई सो दैट योर कॉपी गेट डिस्टिंग्विश्ड, वो सब नहीं करना है। यू कैन राइट डाउन, इन केस यू हैव स्टिल डाउट कि मैं सही करूंगा नहीं करूंगा, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आल्सो। पेंसिल से भी आप कर सकते हो, देन यू चेंज विद द पेन एंड देन राइट द आंसर। इन केस स्टडी कैन वी ड्रॉ लाइंस इन क्वेश्चन, व्हिच लाइंस? या नंबर सब पार्ट यू कैन नंबर, या नहीं, नंबर आप जब करोगे कि एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन में नंबरिंग नहीं है, सब पार्ट नहीं है, तो यू डोंट हैव टू राइट सब पार्ट्स। तो इन दैट केस द सब पार्ट्स विदाउट नंबरिंग इन द क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इट एज ए हेडिंग इन द सब पार्ट। हेडिंग बना लो और उसको लिख दो और अंडरलाइन कर दो। सेल्फ रेफरेंस के लिए आप कर सकते हो, यस, इन द क्वेश्चन पेपर आल्सो। हाँ, लाइक अंडरलाइन द क्वेश्चन, मेकिंग अ सर्किल, हाँ यू कैन डू दैट, यू कैन डू, आई टोल्ड ना, यू कैन डू दैट, है ना? आपको थोड़ा भी डर लग रहा है कि नहीं है, तो यू कैन डू इट विद पेंसिल, बट एवरी ईयर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ माइन हैव डन इट, है ना? और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना लोग करते ही हैं। एग्जामिनर को भी आदत हो गई है हर कॉपी में ये देखने की। ओके,
डन है? इधर कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? Gajaran, any doubt you have? You called me yesterday. नो सर, सर बस वो Okay. टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। टाइम मैनेज क्या नहीं हो रहा है? यू राइटिंग मीन दिस ईयर? सर नेक्स्ट ईयर? यस सर, दिस ईयर। दिस ईयर? यस सर। क्या मैनेज नहीं हो रहा है बताइए? व्हाट? हाँ, अब व्हाट? हो जाएगा टाइम मैनेज एग्जाम वाले क्वेश्चन पेपर में ना? हाँ सर। अच्छा, यू टोल्ड यू लेफ्ट सम 3 क्वेश्चन, राइट? हाँ सर, पहले टेस्ट में 3 क्वेश्चन छूट गए थे मेरे। आप क्या कैसे कर रहे थे उसको? लाइन सीरियल ऑर्डर कर रहे थे? नहीं सर, मतलब अभी आपने जैसे बताया था कि मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से वही कर रहा था। पर वो 25 क्वेश्चन थे शायद 10 मार्क्स वाले पहले टेस्ट में। तो हाँ? लास्ट में मतलब 2-3 क्वेश्चंस मतलब ऐसे ही हुए, ज़्यादा कंटेंट नहीं हुआ उसमें। नोन क्वेश्चन छूट गए, नोन क्वेश्चंस। नहीं, नहीं, नोन क्वेश्चंस अच्छे हुए, जिनमें कुछ आता नहीं था। वो क्वेश्चंस में मतलब 1 छूट गया और 2 में मतलब क्वालिटी आता नहीं रही। सी सी जब नहीं आता ना तो कोई कोई उसमें वरी नहीं है। यू डू नॉट नो, सो क्या करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर नॉन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। नॉन क्वेश्चन छूटना पाप है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी गिवन योर टाइम, स्टडीड दोस क्वेश्चंस वेल, यू प्रिपेयर्ड वेल, यू स्पेंड सम टाइम एंड एग्जाम में आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो आपको डबल लॉस हो ना। आपने वो टाइम में कुछ और पढ़ लेते जो लिख पाते, वो भी टाइम गया और यहाँ भी आपने क्वेश्चन को स्कोर नहीं कर पाया, इसलिए वो नहीं छोड़ने चाहिए। यस सर। जेम्स बॉन्ड, इन केस ऑफ क्वेश्चन इन विच वी, जेम्स व्हाट इज द गुड नेम? Akshay, okay. In case of question which we absolutely know nothing, should we write bogus answer in the end of we have time? See, bogus answer लिखने का टाइम नहीं होगा। See, I will tell why. Because जो मैंने जो आपको तरीका बताया ना, जो आपको बेस्ट क्वेश्चन आता है वो आपको बेस्ट टाइम दे चुके होगे। स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, आपको अगर टाइम मिलेगा तो लास्ट में जो अननोन क्वेश्चन है, जो बिल्कुल नहीं आता, 2 मिनट मिलेगा, 3 मिनट मिलेगा। उसमें बोगस लिखना तो लिखो। क्या लिखोगे बोगस? डेफिनेशन लिख देना, जो साइबर डोम में जो लगता है साइबर डोम, क्या लिखना चाहोगे लिख दो। 2 लाइन ही लिखोगे। डोंट राइट द होल पेज, पूरा बोगस हो जाएगा, उतना टाइम वेस्ट नहीं है। 2 लाइन लिख दो, मन की संतुष्टि हो जाएगी एंड यू प्रोसीड टू द, कुछ वो टाइम जो बच जाए उसको कहीं और लगा दो, कोई अच्छे क्वेश्चन में, राइट अक्षय? ठीक है, क्योंकि यही तरीका है देखो मैक्सिमाइज करने का। बोगस में नंबर नहीं मिलेगा, ये कॉलेज एग्जाम नहीं है, सारे क्वेश्चन पढ़े जाते हैं और बहुत अच्छे से उसको देखा जाता है। नहीं तो ऐसे लड़के टॉप नहीं कर रहे हैं, है ना? कुछ भी नहीं। राहुल की कॉपी अच्छी रही है लगातार, है ना? मैंने शेयर भी करी है, और जो पहले वाले चैनल में जो हम लोग ग्रुप बनाए थे, उसमें उसकी 3-4 लोगों की बेस्ट कॉपी रही, उस सबका सिलेक्शन हुआ है। सर्वानंद का हुआ है, राहुल का हुआ है ना? उसके पहले पल्लवी का हुआ है, जिनका-जिनका बेस्ट रहा है। मनप्रीत का भी कुछ एक कॉपी बेस्ट रहा है। मनप्रीत के भाई प्रीतपाल यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी, अभी जो क्वेश्चन पूछा था। प्रीतपाल वाज़ माय स्टूडेंट, हैं? 2 साल पहले उन्होंने लिया पूरा कोर्स, एंड दीज़ 2 गाइज़, प्रीतपाल एंड मनप्रीत, यही मैं इनका एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। यही दोनों भाई हैं जिन्होंने सारे टेस्ट लगाए हैं। ठीक है? अभी तक कोई भी ऐसा नहीं वो स्टूडेंट हुआ जो सारे टेस्ट लगाया हो। ठीक है? ये सारे टेस्ट लगाए हैं और जो भी क्वेरी है उससे मुझे पूछे हैं, 1 टू 1 फ़ोन करके, बात करके क्लियर किए हैं। और ये लोग बहुत डिवोटेड एंड कमिटेड है। एंड प्रीतपाल 2 साल पहले जब ज्वाइन किया था मेंटरशिप प्रोग्राम, बिल्कुल इन्होंने जो भी टेस्ट लगाते था मेरा, इनका भाई जो मनप्रीत भी लगाता था, बट ही एक्चुअली टुक द मेंटरशिप प्रोग्राम, देन ही क्वालिफाइड द स्टेट डीएसपी, ही इज डीएसपी इन पंजाब पुलिस। एंड फिर से इन्होंने छुट्टी लेके इस बार आए हैं। लास्ट ईयर इनका भाई दिया था, वो भी मेंटरशिप प्रोग्राम किया था मनप्रीत, एंड ही गॉट सेलेक्टेड। इस साल 600 समथिंग रैंक आई है। तो कहने मतलब ये है कि डेडिकेशन है, मेहनत करेंगे आप, सारे टेस्ट लगा रहे हैं लोग, उस तरह से लगाएँगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे बात करिए, कॉल करिए, है ना? जी, दिस प्रोग्राम सीएमपी, इंडिया में सीएमपी इज़ माय प्रोग्राम, आईएसएफ का प्रोग्राम नहीं है ये। इट्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आईएसएफ, ठीक है? तो आपको कोई चक्कर नहीं है, आपको सीएमपी के बारे में जो क्वेरीज़ है, कैसा भी है, आप मुझसे बात करें। ठीक है? इट्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आईएसएम, नथिंग एल्स। आई जस्ट गिविंग देम द प्लेटफॉर्म एक्सेस कि आपके एक्सेस से करेंगे। रेस्ट एवरीथिंग इज़ बीन रन बाय मी ओनली, है ना? अपार्ट फ्रॉम थोड़ा बहुत, है ना? इवन माय टीम इज़ करेक्टिंग द पेपर एंड यू विल गेट द फीडबैक कॉल आल्सो इफ यू वांट। आपको फीडबैक कॉल चाहिए, you just let me know कि सर इसमें कॉपी फीडबैक चाहिए, तो आई विल टेल द मेंटर, आई विल गिव द मेंटर नंबर, यू कैन कॉल हिम। उज्जवल सर हैं, वो एथिक्स की कॉपी चेक कर रहे हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट मेंटर आई हैव इन माय टीम। उज्जवल वो है, और जो लोग उनको जानते हैं पहले से, वो भी जानते हैं कि बहुत अच्छी कॉपी चेक कर। इवन राहुल हैव आल्सो टोल्ड मेनी टाइम्स, राहुल एंड और भी जो जो लोग निकले हैं कि
कि इनकी कॉपी चेकिंग बहुत अच्छी है ना? ही इज़ वेरी गुड एट गुड कमांड ओवर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉपी में बी द पर्सन हु इज इनटू सर्विस वो चेक करेंगे। आई विल बी टेलिंग यू, आई विल राइटिंग इन द चैनल आल्सो कि कौन क्या-क्या कॉपी चेक करेगा। तो उससे यू विल हैव द नंबर एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम, राइट? सो ये तो हो गया। आज तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है। इट टूक अ लॉन्ग टाइम बिकॉज़ ऑफ दिस, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा डिटेल्ड है। और भी चीज़ें हैं, है ना? आई विल डिस्कस इट मे बी नेक्स्ट नेक्स्ट संडे, ठीक है? इज़ इट फाइन? कॉपी इवैल्यूएशन अगर है ना जनरली थोड़ा-सा यहाँ पे 1 वीक में हो जाता है, पर आई थिंक जो कॉपी वहाँ से कॉपी चेक होके आप डाल रहे हैं, वहाँ से आने में डिले हो रहा है। आई डोंट नो बट आई हैव टोल्ड देम कि इमीडिएटली कॉपी आप रिलीज़ करके हमको दे देना, हम लोग चेक कर लेंगे। सो वो 1 वीक में हो जाना चाहिए अभी से। सो सो आई हैव डिस्कस्ड दिस। आई थिंक नेक्स्ट जो क्लास होगा वो संडे को होगा। आई विल डिस्कस ऑलमोस्ट, अच्छा जो मैं बोला हूँ ना ये सबके लिए वैलिड है। जीएस 1 2 3 4 इसमें कहाँ वैलिडिटी का कमी है देखते हैं। एथिक्स में, इन द एथिक्स पेपर फॉर द केस स्टडी में तो देखिए यू कैन डू इन सीरियल ऑर्डर बिकॉज उसमें क्या है, यू डू नॉट नो एनी क्वेश्चन, नो चॉइस, उतना टाइम नहीं कि आप चॉइस करो, पढ़ो, फिर समझो। सो यू रीड द क्वेश्चन, अटेम्प्ट इट। केस स्टडी तो एज इट इज होगा विद द सीरियल ऑर्डर। थ्योरी पार्ट में सम ऑफ द थ्योरी पार्ट यू नो वेल, सम ऑफ द थ्योरी पार्ट यू डू नॉट नो। सो जो आता है उसको कर लेना फटाफट, और जो नहीं आता एथिक्स में छोड़ना नहीं है। एथिक्स इज सब्जेक्ट इन विच यू कैन राइट योर ओन व्यूज, वो छोड़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जीएस 1 2 और 3 के लिए जैसे साइबर डोम ये सब आएगा तो उसके लिए वैलिड है। एथिक्स में यू कैन राइट समथिंग, एथिक्स में यू कैन गेट मार्क्स, यू कैन राइट योर ओन एक्सपीरियंस, योर नॉलेज बेस्ड थिंग। तो एथिक्स को क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। There you select the best questions followed by the lesser known questions. Unknown question तो कुछ होता नहीं ethics में. You write something in unknown also. So you complete that in ethics. उसमें valid है. सिर्फ case study में valid नहीं है. Serial order you can go for the case studies. और मैंने पहले ही बताया था case study पहले कर लेना. ठीक है. Already मैं उसको डिस्कस कर चुका हूँ. So ये है GS 1 में वैलिड है, 2 में वैलिड है, 3 में वैलिड है। ठीक है। देन कमिंग टू द ऑप्शनल, ऑप्शनल में क्या करना है उसकी स्ट्रेटजी बताता हूँ, कौन सा पहले करना है। देखिए बेस्ट स्ट्रेटजी वो ये है कि जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसके सब पार्ट्स होते हैं। जनरली जनरली दे मेक द 5 सब पार्ट्स। उसको क्या 10 मार्क का कर देते हैं, 50 मार्क्स का। ठीक है, 5 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स पर क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 and 5 they will divide into 5 sub parts. Each question will carry 10 marks. सो क्या करना है आपको कि क्वेश्चन जो कंपलसरी है उसको एंड में करो। एक स्ट्रेटजी ये है कि बिकॉज 10 मार्कर है ना, तो इन केस यू हैव लेसर टाइम यू कैन गो ऑन हेडिंग वाइज आल्सो। आप छोटा छोटा भी लिख सकते हैं, जल्दी लिख सकते हैं। यू राइट इन टेलीग्राफिक लैंग्वेज आल्सो, इन पॉइंट वाइज आल्सो, एंड बहुत ही शॉर्ट में लिख सकते हैं 10 मार्कर। बट आप फुल क्वेश्चन 2 या 3 या 4 या मे बी 6 7 8 इसको आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते। यू हैव टू एक्सप्लेन इट। वो बहुत ही उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स भी होते हैं। सो इट विल टेक सम टाइम। सो 20 मार्कर होगा, आपको 15 मार्कर होगा, 10 मार्कर, है ना, ऐसे ऐसे होते हैं। 15 दो हो गया, एक एक आपका 20 हो गया। सो दे नीड मच एक्सप्लेनेशन। तो उसमें देयर यू कांट राइट इन टेलीग्राफिक लैंग्वेज, जल्दी नहीं लिख सकते शॉर्ट में। सो देयरफॉर ट्राई टू अटेम्प्ट द नॉन कंपल्सरी क्वेश्चन इन द बिगिनिंग। क्वेश्चन 2 है या 4 है और वहां सेक्शन बी से एक है, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस। अटेम्प्ट देम इन द फर्स्ट 2 आवर्स, एंड लास्ट आवर से थोड़ा ज्यादा, 1 घंटा 5 मिनट बच जाए, 1 घंटा तो मिनिमम चाहिए। लास्ट आपको जो मिलेगा, यूटिलाइज दोज फुल 1 आवर इन टू कंपल्सरी क्वेश्चन। इफ यू हैव, उसमें भी क्या है, जो 5 पार्ट्स हैं, जो मोस्ट नोन क्वेश्चन है उनको पहले कर लो, वॉट एवर बेस्ट यू कैन राइट। फिर जो नहीं आते, एक आध पार्ट नहीं आता है, मे बी ए या बी नहीं आया, तो जस्ट राइट समथिंग, तो वहां भी वो आपका टाइम बैलेंस हो जाएगा। फिर इन द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो, वहां भी सेम चीज अप्लाई है। ठीक है, व्हाट माय पॉइंट? तो दिस वे यू कैन वर्क इन द ऑप्शन ऑल्सो। नाउ Arban, so theory questions are also pretty long. How to read quickly? मतलब क्विकली रीड क्या करना उसमें, देखिए यू टू जस्ट टेक ए ग्लैंस पे पता चल जाता है कि ये अच्छा मेरे को आता है या नहीं आता है। तो तो ऑन दैट बेसिस यू डिसाइड दैट कि पहले मुझे कौन से करना है। देखिए 1.5 hour इज देयर फॉर द थ्योरी क्वेश्चन, तो ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। सो डोंट यू रीड कंप्लीटली दोस क्वेश्चंस व्हिच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट। क्या आप उसको पढ़ ले तो आप उसको अटेम्प्ट करना है।
उसको ग्लैंस लेके देख लो कि ये टॉपिक मेरा तैयार था, उसमें से है क्वेश्चन, है तो करो, नहीं तो नहीं करो, वो हो जाएगा विद यू नो इफ यू डू द प्रैक्टिस, इस सीरीज में करोगे इसमें तो आ जाएगा। ओके, गॉट इट पॉइंट। Any other query? We'll close and we'll start the next session on Sunday, same time, 9 p.m. कोई delay हुआ then I will update in the group. I'll share some of the material, कुछ कुछ अच्छा material तो I will be keep sharing and I will write some instructions, go through them, unmute this channel. Stay in touch in case you have any doubt or message. You just send me message, send me on Telegram or WhatsApp. I'll reply. And in case you need a call also, you can book the time also कि सर इतने बजे कॉल कर ले। इन केस शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे तक यूजुअली आई विल टेक द कॉल। इन केस यू हैव वांट टू कॉल मी डायरेक्टली यू कैन डू सो आल्सो, आप वो भी कर सकते हैं। आई मे पिक द कॉल देन आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। इफ आई एम नॉट एबल टू पिक योर कॉल, नो प्रॉब्लम, आई विल कॉल यू बैक। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो कॉल मी अराउंड क्या 12 टू बेसिकली 12 टू 2 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, 12 से 2 के बीच में, या मोटा मोटी दिन में 11 से 1 या 2 के बीच में भी यू कैन ऑल्सो कॉल मी डायरेक्टली इफ यू वांट टू कॉल या मैसेज, और यू कैन टेक टाइम। So in all things, I will be the person who is very flexible to take calls and send you messages. While answer, what should I focus? Should we focus on covering as many dimensions possible? Do we need to substantiate all the arguments? देखो ये तो बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है, यू नीड टू एड्रेस द क्वेश्चन स्पेसिफिक, तब पता चलेगा। आई विल डू दैट आल्सो, ठीक है, बट हियर अभी आई विल टेल यू दैट वी फोकस ऑन डायमेंशंस। ऐसे डायमेंशंस की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्वेश्चन का स्पेसिफिक होगा, वो खुद ही बताएगा कि पॉलिटिकल डायमेंशन बात करना है, इकोनॉमिक्स डायमेंशन बात, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन इकोनॉमिक के डायमेंशन बात करेगा, पॉलिटिक क्वेश्चन पॉलिटिकल डायमेंशन या कुछ और डायमेंशन उसमें लिखा होगा उस पर बात करेगा। आर्ग्यूमेंट्स तो आपको देना ही पड़ेगा with examples. All most of the arguments should be supported by examples. जितने examples लिखेंगे उतने अच्छे नंबर रहेंगे। Example, case study, you keep on reading, revising and writing somewhere. उससे याद रहेगा and just you have to throw the names of the examples and it will be understood. ठीक है? So dimensions will be very clear as per the questions and क्या उसमें substantiate करना है वो भी आपको जरूरी रहता है, arguments तो रहती है, with examples will be very good. Okay. ठीक है, ओके, और भी स्ट्रेटजीज हैं, और भी टिप्स हैं, आई विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू सर। एंड क्या प्रिंसिपल, आई विल आंसर योर क्वेरी, है ना, मैक्सिमम बाय टुमारो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर आप सर कॉपी थोड़ा जल्दी से कह देना चेक कि आप तक पहुंच जाए। क्या चीज? कॉपी कॉपी, हाँ मैं बोल दूंगा। ओके सर, बाय, थैंक यू।